First of all, I would like to request all of you to please start your camera so that we have that feeling of having a meeting. Otherwise, I will be speaking to a lot of black boxes. I'm not very good in conversation with black boxes. So thank you very much. I appreciate your kind gesture. And here we begin. So by the way, we are also live on LinkedIn, and there are many people on Zoom and many people on LinkedIn. So welcome all of you. Now I hope my screen is visible. Okay. So good evening. Today's our topic is win more referrals from your clients. And we will also show you or share with you a structured referral management system for mutual fund distributors. And this is going to be our agenda, what we are going to cover today. So once upon a time, these are the points that we will cover in agenda. Then we want to discuss who can be a referrer, then something interesting, then referral challenges, what people face. Then we try to define what will be the ideal referral system. And we have one surprise announcement for you, and then we have a demo. So last one is going to be the long part, and everything else is going to be very short, very quick. Without creating that context, I think if we show the demo, it won't work. Okay, and how we decided that we need to do this webinar and why this particular topic is after speaking to a lot of our clients who are using Sanchay CRM, who are into mutual fund distribution. We came to know that referral is a big source of clients, but it is very, very, we can say, mismanaged or not managed. So once upon a time, what I want to share here is that, see, in initial days, the commissions were fantastic. There was no online direct to investor platforms. There was no Geo BlackRock announcements who were going directly to the investors. So you had a very good time. And then these people started to come. And along with that, the commissions have reduced, the competition has increased, and investors have got more options. So how do we deal with that? I think the biggest and strongest feature that any MFD can have is having referrals or having the direct relationship with the investors. So how do we take advantage of that? This is whole point of discussion here. So first of all, let us try to define what are referrals. So I know all of you know this because this is the topic of the webinar. But referrals means when someone, maybe your client or non-client, refers their friend or relative or known person to you, they are called referrals. And the person who is referring is ideally called the referrer. So as Javed Akhtar says, whenever you want to discuss or debate anything, first we should clarify the meaning of words. Because once we clarify the meaning of words, then everything becomes more clear. So I recently asked this question to many mutual fund distributors who are our clients and who are yet to be our clients. How do we identify a referrer? And the answer that I got very commonly was, "Sir, na wo pata chal jata hai." So I was like, "नहीं, ऐसा पता चल जाता है वो नहीं. We need to have a certain formula." Then from the discussion, what I recovered is there were two things which they particularly see. First is the client has to be very happy, very delighted with your services. The client has to have trust on you and your expertise. That is the condition number one. And condition number two is that client need to be very, very well connected in his network. In short, his phone book or her phone book should have many important names who can be your potential investors. So that is how we define the referrer. So next time when you meet somebody, just make sure that these are the two check boxes you mark yes. Now this is interesting. Truth is stranger than fiction. The original line is by Mr. Mark Twain.
सत्य कल्पना से विचित्र होता है. This line is by Mr. Vijay Rajput Singh. He is the character of film called Aankhein 2002, played by Mr. Amitabh Bachchan. So we want to see how this truth is stranger than fiction. So these are kind of things that we know, but still we ignore or we don't focus on that. So let's understand what are these things where we know, but then we don't know. Okay. So first is all of us have been taught from our childhood that cow gives milk. Think again. Cow does not give milk. You have to do effort to get milk from the cow, right? You have to convince her. You maybe have to tie the cow and then you get the milk. So we are not telling you or recommending you to tie anyone, but you have to at least convince your referrers to give you referrals. So this is an interesting thing. At first, we might think that even non-clients can be our referrer. But then an interesting thing came up. And these are all points that I got from all of you. Okay. So you might or might not agree. I have full respect for whatever you feel or whatever the opinion you have. But one of the mutual fund distributors informed me that if a non-client refers somebody to him, he generally tells that person that first you become my client and then I will accept your friend. Okay, that's a very good way of getting two clients in one shot. So just give it a thought whether you want to accept referrals from a non-client. Yeah, if it's your friend or relative, then it might be okay, but otherwise you can think. Now, no one in the world better than you can understand that compounding works, and compounding always works. In case of referrals, compounding always works. So if you start today, in some time you will see that compounding effect is taking effect. And one more thing that we all know is referrals close faster than the leads that you might get from social media. So all those of you who are trying very hard on social media to get leads, I think the referrals will be better option. So social media can be good for spreading awareness or establishing your thought leadership, but business, I think referrals is the best. There is one more perspective or point of view shared by few of our clients that should you always be asking referrals. You know, कभी कभी ऐसा होता है कि if you ask more for referrals, people might think कि आपका धंधा नहीं चल रहा है क्या? Why are you asking so many referrals? Are you not, your business is not running properly? So you have to take care this that you are not always asking referrals. This is very, I think we can say this is a common sense part, but we most of the time miss this. I think we always need to say thank you to the person who is giving us referrals, whether or not the referral is buying anything from you. Okay. So if that person becomes your client or no, always remember to say thank you in whatever way you want to say, but say thank you. I'm not telling you need to give gift or you need to do something else. I'm telling you need to say thank you. Now, interestingly, 65% of business of NJ is referrals. And I don't think this is a luck. This is result of a system and system which we have been following for years. Now, most of you know NJ, but there are a lot of people today who might not be knowing NJ. So let me explain few things about NJ. So NJ is, the name comes from Narendra and Josna. These two people happen to be my mom and dad. So we have one company, three founders. So three of us, we are three brothers, and we founded this company. We have 7 different products. We are 26 years into this business. On last 15th of August, we completed 26 years. We are 118 team members as of now, and we have 300 plus partners across India for all these 7 products. And we have 5,000 plus customers and 45,000 plus users. And all this is happening from a village called Bhilad in Valsad district of Gujarat,
which is on border of Gujarat and Maharashtra. Sorry. So let us understand what are the challenges in getting more referrals, or what are the challenges in designing and implementing the system for referrals. So first is, I have seen many people who are hesitant to ask, right? They might be providing good service. If their client gives referrals, they will take, and if they don't give, they will not even ask. Okay, so I think that's a bad idea. I don't think we need to hesitate to ask. We can obviously ask. Don't ask too much, but you can ask. Then there is no structured process, right? So there is no way to log or record the leads which are given by someone, or there is no way for follow up. And because you don't have way for follow up of the leads, there is obviously chance that you miss to say thank you to the referrals. Obviously there is lack of tracking system, so you don't know which person gave how many referrals and what was the end result of that. So once you don't have any kind of tracking system, you don't know what's working and what's not working. So that is a very big problem. So everything is depending on chance or goodwill or luck. I don't think it need to be that way. We can change that. So clients even forget to give you referral when they are very satisfied. And by the way, there are some clients which I was told that who do not want to give referral. They will say, तू मेरे साथ धंधा करता है तो कर, मेरे किसी रिलेटिव में या मेरे दोस्त में मत जाना. So this is a personal preference of a client, and we need to respect that. Now, what should be the ideal referral system? Okay, so if see, you already know how to get referrals. You are already very good at providing good services. You are already very good at doing the planning part or the goal planning or risk profiling. Everything you are already good at. You just need a good referral system which will help you to manage this referrals. So first is, whenever you get a lead, you need to have a mechanism where you can identify who was the referrer. Okay, now here one important thing comes is that if you know that person, the lead directly, then the referrer is yourself. The concept of self being referrer is something new. It might sound to you, but it is very common and it is very useful to understand that. Another thing is, you will need to have a mechanism to analyze leads by referrers. Means which referrer gave how many leads, what was the end result of those leads, how much AUM did you collect, or how much AUM did you make out of those leads given by those referrers. Then you need to have a mechanism to identify referrers of the existing clients. So let's say if you already have 1000 clients, you need to have some mechanism to identify who gave you those references, right? And then you need to have a mechanism to analyze the clients given by the referrers. How many clients given by a referrer? What is the total AUM of that? When was that referral given? How long the client has been with you? All those things. Then you need to have a mechanism to do referrer analysis. Okay. So how many leads were given by somebody, or how many clients do you have who were referred by that person? So this is very important thing. If you get all these things, it will be very useful to you. And this is very important, recurring referrer activities. Now, once you have identified the people who are good referrers for you, you need to have some mechanism by which the system reminds you periodically, recurring in an automatic way, to connect to those people. Now, how do you connect? That is up to you. You may give a call, you may call them to some event, you may just go and meet them for a coffee or send them some gift, whatever way you want to do it. But you need to have a recurring referrer activities. If you have a large team, so when you have so many relationship managers, you also need to have a system to analyze RM wise referrers and what is their result. Now we have a surprise announcement before we jump to the demo. We are arranging our next webinar on WhatsApp chatbot that works for financial advisors.
This event is going to happen on Friday, 26th September at 4:30 p.m. So this Friday, today we are having referral webinar, and next Friday we will be having this. Okay, the registration links will be sent to you from the same number of our WhatsApp. Okay. Yes. So just now we had that link in the chat also. If you want, you can just copy that link and save it for later. By the way, we will send you after this event also. So before we jump into the demo, let me explain you what is Sanchay CRM. So Sanchay CRM is a specifically designed CRM system for mutual fund distributors and financial advisors. So we have made sure that the challenges faced by mutual fund distributors are resolved by this CRM. So one more thing, most of the time people feel that when you say this is a software for mutual fund distributors, people think that we are talking of replacing your investment platforms like Investwell or Red Vision or Advisor Coach or Vijaya. Okay, no, it's not that. This system is complementary to that system. In that system, you manage investment of your client. In this system, you manage your client, and also you manage your team. So I'll hand over to Bhumi, and she will take you through the product demo, which will show you how all these things work in Sanchay CRM. So over to Bhumi. Thank you, Limit sir. Good afternoon, everyone. Actually, good evening. So before we start with the actual demo, मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगी. जैसे सर ने हमें पूरा बताया कि क्या क्या रेफरल मैनेजमेंट सिस्टम में होना चाहिए. Now, most of the times what we do is when we will start from leads because that is the entry point for any business that is coming to you. तो हम अभी तक क्या करते थे, तो लीड्स के लिए हम लोग ने सोर्स आइडेंटिफाई किया था एज अ रेफरल. मतलब जैसे हमारे पास सोशल मीडिया से लीड्स आते हैं, हम इवेंट्स करते हैं, वहां से लीड्स आते हैं, कोई कोल्ड कॉल कर लिया या फिर किसी के साथ बात हुआ तो वहां से लीड्स आते हैं. वैसे ही रेफरल को भी हमने एक सोर्स में बांध के रखा था. बट वी फॉरगॉट टू आइडेंटिफाई कि रेफरल के इज नॉट जस्ट अ सोर्स फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द लीड. Perhaps it is one of the most important parameters जिसके बेसिस पे हमारा आगे का जो बिजनेस है उस क्लाइंट के साथ में वो भी डिफाइन हो सकता है. तो ऑर्गेनिकली हम बिजनेस जब किसी लीड से स्टार्ट करते हैं तो वहां पे रेफरल टैगिंग इंपॉर्टेंट क्यों है. सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. आई विल स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन एंड आई विल शो यू कि हम लोग लीड जब भी हमारे पास कोई नहीं आती है, मतलब कि कोई भी नया प्रोस्पेक्ट आता है, तो वहां पे कैसे टैग कर सकते हैं कि ये कौन से रेफरेंस के थ्रू आ रहा है हमारे पास. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. ओके. सो ये मैंने यहाँ पे लीड का फॉर्म ओपन किया हुआ है जहाँ पे हम संचय में लीड कैसे एंटर करते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी. और इसमें लीड कैसे हम टैग करेंगे रेफरेंस के अगेंस्ट में, दैट आई विल शो यू. तो लेट्स से मेरे पास में कोई लीड है जो मुझे सीआरएम में डालना है. आई विल जस्ट ऐड दैट लीड हियर. यहाँ पे लीड टाइप विल से कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब कि मेरे लिए नया बिजनेस है ये. मैं इनके साथ में पहले कुछ बिजनेस नहीं कर चुकी हूँ. यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये वेबिनार से आया है, रेफरल से आया है, कोई भी सोर्स हो सकता है. लेट्स से वी टारगेट एज अ रेफरल. किसी रेफरल ने दिया है ये लीड. नाउ व्हेन वी से रेफरल ने दिया है तो हमें यहाँ पे रेफरल मेंशन करना चाहिए कि कौन से रेफरल से ये लीड आ रही है हमारे पास में. So to identify that referral, you can either search, it could be a existing client या फिर ये referral हो सकते हैं आपके. बट जैसे सर ने बताया कि अगर वो आपके existing clients है, then that referral makes more sense. तो हमने यहाँ पे existing clients के लिए option दिया है. आप अपने रेफरल्स को या फिर आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को भी सीआरएम में पूरा उनका मास्टर मैनेज कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं. इसमें कुछ है जो हमारे रेफरल्स है, जैसे जहाँ पे फैमिली या कुछ टैगिंग नहीं है. सो दीज आर ऑल जस्ट माय रेफरल्स जिनके थ्रू मेरे पास बिजनेस आ रहा है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली डूइंग बिजनेस विथ मी. वैसे ही जहाँ पे फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड है
तो दैट आर माय क्लाइंट्स जिनके साथ में मेरा ऑलरेडी वो मेरे पास इन्वेस्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से दिस स्पेसिफिक लीड इज कमिंग फ्रॉम नव्या शर्मा फॉर एग्जांपल। कौन से प्रोडक्ट के लिए है, तो हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उसमें उनको एसआईपी करना है। फोन नंबर यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे अपने लीड का। नाउ यहाँ पे क्लाइंट ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, सो ये अगर आप कैप्चर कराते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा। नाउ हम जब रेफरेंस टैग करते हैं और उनके थ्रू हम लोग क्लाइंट्स लाते हैं, तो वो क्लाइंट का डोमेन क्या है वर्क का, वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प मी इंट्रोड्यूस द नेटवर्किंग, मतलब ये क्लाइंट मुझे और कौन कौन से जगह पे कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, तो हम वो नेटवर्किंग या ऑक्यूपेशन पता रहेगा तो उस तरह से उनके साथ कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो इफ यू हैव द क्लाइंट ऑक्यूपेशन यू शुड ऐड। और कितना AUM पोटेंशियल है ये क्लाइंट का, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि उनका AUM पोटेंशियल इतना है और अभी कितने का SIP करा रहे हैं। सो आई कैन से कि इनका 25,000 का लेट्स से SIP है। करंट कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर कुछ लीड रिलेटेड आपके रिमार्क्स है जो आप अपने टीम के साथ शेयर करना चाहते हो, जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट का उनका पर्पस क्या है, कितने टाइम के लिए करवाना चाहते हैं, इसका आउटकम क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे कमेंट या हिस्ट्री में मेंशन कर सकते हैं। और लीड की जो डिटेल्स है, जैसे कहाँ बिलोंग करता है वो, तो वो आप यहाँ पे एड्रेस इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं। एंड आई विल जस्ट सेव दिस लीड। तो मैंने क्या किया, जैसे हम नॉर्मली कोई लीड या प्रोस्पेक्ट डालते हैं सीआरएम में, वैसे ही मैंने वो लीड या प्रोस्पेक्ट सीआरएम में डाला। बट मैंने एक चीज एडिशनल किया कि मैंने वहां पे रेफरल टैग किया है। अभी जैसे ही हम ये रेफरल टैग करते हैं सीआरएम में, हमने ये ऑटोमेशन रखा है कि इंटेलिजेंटली सीआरएम इस क्लाइंट के अगेंस्ट में रेफरल वाला मेरा, हमने एक ऑप्शन रखा है जहां से आप अपने क्लाइंट्स में रेफरल कौन है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीआरएम विल अपडेट दैट रेफरल टैग फॉर यू इन द लिस्ट ऑफ योर क्लाइंट्स। तो जैसे जैसे आपके लीड्स में आप रेफरल टैग कर रहे हो, वैसे वैसे सीआरएम आपके क्लाइंट लिस्ट में ऐसे कितने क्लाइंट्स है जो आपके रेफरर्स है वो भी रिफाइन करते जा रहे हैं। सो नाउ यू आर एबल टू गेट अ व्यू कि आपके कितने क्लाइंट्स है जो एज अ रेफरर आपको हेल्प कर रहे हैं नया बिजनेस लेके आने में। एंड दिस आई एम शोइंग यू फॉर वन ऑफ द लीड्स। इसी तरह से हम लोग ये सेम चीज एनालिसिस पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, तो एक बार वो भी बताती हूँ मैं। एक हम कर सकते हैं कि वी कैन गो टू रिपोर्ट्स। यहाँ पे मैंने 2 रिपोर्ट्स बनाए हैं अभी विच आई कैन शो यू। तो लेट मी जस्ट ओपन बोथ द रिपोर्ट्स। हमने एक रिपोर्ट बनाया है जहाँ पे मेरे रेफरल्स के थ्रू मेरे पास लास्ट 30 डेज में कितना बिजनेस आया है, मैं वो दिखा रही हूँ आपको अभी स्क्रीन पे। इसमें हमने फिल्टर लिया है कि लीड्स जो भी क्रिएट हुए हैं लास्ट 30 डेज में, आई कैन सी दैट लिस्ट ऑफ लीड्स। इसमें हमने रेफर्ड बाय जो फील्ड रखा था लीड में, जिसपे से मुझे ये पता चले कि मेरे कौन से लीड्स में रेफरर कौन है, उसके ऊपर हमने ग्रुप किया है और एक और ग्रुपिंग दिया है स्टेटस पे। तो अब मुझे ये रिपोर्ट में डेटा, या फिर मैं बता सकती हूँ कि लीड में क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है, तो कौन से रेफरर के थ्रू मेरे पास टोटल कितने लीड्स है और वो लीड का मेरे पास में एक्सपेक्टेड बिजनेस अमाउंट कितना है। और तो और ऊपर अगर मैं चार्ट पे देखूं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन भी दिख रही है कि इसमें से इन प्रोसेस लीड्स कितने हैं, न्यू लीड्स कितने हैं, कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कि जिनका बिजनेस मेरे पास आ गया है इन्वेस्टमेंट के रूप में, वैसे लीड्स कितने हैं, लॉस्ट हुए हो वैसे लीड्स कितने, और जो ऑनबोर्डिंग स्टेज तक आ गए हैं वैसे लीड्स कितने। And this I am able to see according to their investment amount. So based on this, if I see, there's Kimaya Bajwa, there's Miraya Tara, there's Nayan Tara, वेसन एंड शान, जो मुझे मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मेरे लीड बिजनेस के लिए। और कुछ ऐसे लीड्स भी है जिसमें अभी रेफरल आइडेंटिफाइड नहीं है। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जहां पे लीड्स में रेफरल टैग नहीं है, फर्स्ट एक्सरसाइज विच आई गिव इट टू माय टीम इज आइडेंटिफाई ऑल दोज लीड्स जो ऑलरेडी इस रिपोर्ट से वो कर पाएंगे एंड टैग द रेफर्ड बाय। ओके, सो दिस इज वन रिपोर्ट फ्रॉम वेयर आई कैन सी कि मेरे लीड्स में जो रेफरल्स टैग्ड है उनके थ्रू मुझे एनालिसिस सीआरएम में क्या मिलेगा, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प मी जनरेट द बिजनेस, एनालाइज व्हाट इज हैपनिंग
एंड मेरे रेफरल्स के साथ में मैं कनेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकूं. Similarly, another report on the lead which we can view is lead business by referrals. तो मेरे टोटल लीड्स जो क्लोज हो रहे हैं उसमें से कौन से रेफरल का कंट्रीब्यूशन क्या है मेरे लीड क्लोजर में या फिर मेरे बिजनेस में, तो वो मैं यहाँ पे देख सकती हूँ. दिस इज गिविंग मी द सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट, बट हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी डिटेल्स जो मुझे यहाँ पे मिल रहे थे. अगर मैं यहाँ पे समझो जैसे आहान के लेट्स से वी ओपन बादल्स लीड्स, इसमें एक लीड है जो न्यू में है, एक लीड है जो कंप्लीटेड है. So if I go to the report, in this specific report, I am also able to see details कि कौन सा लीड है मेरा, कौन सा आरएम वो अभी हैंडल कर रहा है, किस रेफरेंस के थ्रू आया था, उसका एक्सपेक्टेड बिजनेस कितना है, और तो और मैं यहाँ पे उसके कमेंट्स या जो करंट कम्युनिकेशन चल रहा है इस लीड पे वो भी लेके आ सकती हूँ. So this is giving me all the details that I want to view when I am discussing my ongoing leads with my team. उसी तरह से लीड बिजनेस रिपोर्ट में अगर हम जाएंगे तो दिस कैन गिव मी एन ओवरव्यू और द समरी कि मेरे पास कितने रेफरेंसेस है जिनके थ्रू मेरे लीड्स ऑनगोइंग है, उसमें से कंप्लीटेड कितने लीड्स है, उनका टोटल बिजनेस कंट्रीब्यूशन क्या है, इन प्रोसेस में है उसका टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है, न्यू में है ऐसे मेरे रेफरल लीड्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, या फिर लॉस्ट हुए हैं या ऑनबोर्डिंग में है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, and the overall contribution, that is what my referral is contributing to my business. ठीक है, तो ये हुआ लीड्स का कि अगर हम लीड लेवल पे टैग करते हैं कि हमारे रेफरेंसेस के थ्रू कितने लीड्स आ रहे हैं और वो रेफरेंस ने हमें जो लीड दिया है उसका हम जिस तरह से वो लीड पे बात कर रहे हैं, तो इफ वी कीप ऑन अपडेटिंग आवर रेफरल्स कि हमने वो लीड को क्लोज कर दिया है, वी एक्नॉलेज दैट, दैट कैन एक्चुअली गिव अस द राइट business from our right referrals. ठीक है. Now here I will pause for a second and I would like to ask कि हमने अभी जो देखा, how many of you think that this could actually be useful, और ये चीज करने के लिए अभी तक आपके पास में कोई solution या फिर method नहीं था, and doing this through संचय can actually help you identify कि आपका business जो है वो referrals के through कैसे बढ़ सकता है. I would like every one of you to participate in this so that we know whether we are going in the right. So we have received 5, 6, 7, 8 people who have told this is useful. And for others, if you find that this is useful or you need to give us some feedback or comments or any other suggestions, you are welcome. Okay. So please do share your suggestions openly, and it will be very useful for us to make this feature still more useful. Okay. And by the way, we came to know about this requirement maybe 5 weeks back. And today we are ready with the product, and it will be live for all of you by next Thursday. So all the clients who are using Sanchay CRM will be able to use these features by next Thursday. And all the clients can request our implementation person. They will arrange one webinar for you. और हम आपको उसमें बता देंगे कि करना कैसे. I hope it is clear. Okay. Thank you for your feedback. We appreciate that. Yes, Bhumi, please carry on. ओके सर. सो हमने जैसे लीड्स पे देखा, तो ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है बिजनेस का, बिकॉज एज वी ऑल नो मैक्सिमम हमारा जो बिजनेस आता है दैट इज फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. तो जैसे हम लीड्स पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि हमारा कितना बिजनेस किस रेफरल के थ्रू आ रहा है, उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये आइडेंटिफाई करना भी कि मेरे एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट्स है मेरे पास, हो सकता है कि आपके पास लेट्स से 100 क्लाइंट्स है, 1000 क्लाइंट्स है या 1 लाख क्लाइंट्स है, तो वो क्लाइंट्स का कभी ना कभी किसी ने तो आपको रेफरेंस दिया होगा, दैट इज हाउ दे आर योर क्लाइंट्स. या तो वो आपके डायरेक्ट कनेक्शन से बने हैं इसीलिए वो आपके क्लाइंट है, या तो वो आपके आरएम्स के साथ में एसोसिएटेड है, मतलब आपके जो टीम मेंबर्स है वो उनके फैमिली मेंबर्स है, उनके रेफरेंसेस है इसीलिए वो आपसे कनेक्टेड है, या तो आपके जो क्लाइंट्स है उन्होंने किसी को रेफर किया था एंड दैट इज हाउ दे हैव बिकम योर क्लाइंट्स. तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप विल बी टू आइडेंटिफाई how many of your existing contacts or your existing list of clients are your
are through your referrals. तो ये कैसे देख सकते हैं? We will go to that portion of the demo now. I will again share my screen. Okay. I hope my screen is visible. ठीक है. So let's say this is my list of existing clients, which when I'm saying clients, what I mean is the list of families or the organizations with whom I'm connected, जो मेरे पास investment करा रहे हैं. ठीक है. तो ये list of clients में how can I identify कि मेरे कौन से clients किस referral के through है? So there are two ways you can do this. One is you can first of all search कि आपके पास ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिसमें रेफरल टैग नहीं है. तो हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं. वी हैव क्रिएटेड वन सेव्ड सर्च और वी कैन से अ प्री डिफाइंड फिल्टर जो आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि आपके ओवरऑल क्लाइंट लिस्ट में से ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिसमें अभी तक आपने रेफरल टैग नहीं किया है. एंड व्हेन यू यूज दैट फिल्टर यू विल गेट दिस व्यू जहां पे आपके पास अपने वो क्लाइंट की फैमिली का नेम, किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनका AUM कितना है और उनकी रेफरेंस की फील्ड, इतनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखेगी. नाउ इफ आई स्टार्ट ऑन लुकिंग इनटू दिस क्लाइंट्स आई विल नो कि ये जो क्लाइंट है ना ये तो मुझे मेरे टीम मेंबर ने रेफर किया था, उनके थ्रू आया है. सो आई कैन जस्ट सिलेक्ट दैट. सिमिलरली मेरे को पता है कि ये भी मेरे क्लाइंट के थ्रू मेरे टीम के थ्रू है. Mia is also through my team and Rudra is also through my team. तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ. I can just go to this edit option. यहाँ से मैं referred by field सिलेक्ट कर सकती हूँ and I can just select the name of my team member जिन्होंने मुझे ये clients रेफर किए थे and I will update. So now वो जो 4 contacts clients थे मेरे इस लिस्ट में, the families that I have from those referrals, वो इंफॉर्मेशन यहाँ से अपडेट होके निकल जाएगा. सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ 360 मोर क्लाइंट्स. यहाँ पे इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपने जितने भी क्लाइंट्स अपडेट किए हैं, जिनका आपने रेफरेंस अपडेट कर रेफरर बाय अपडेट कर दिया है, तो वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है. सिमिलर ट्रैकिंग आपको यहाँ से रिपोर्ट पे भी मिलेगा. तो इफ आई गो टू द लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक फैमिलीज विदाउट रेफरल टैग, ये हमने रिपोर्ट बना के रखा है. व्हेन आई गो टू दिस रिपोर्ट आई कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल द क्लाइंट्स जहाँ पे मेरा रेफरेंस टैगिंग मिसिंग है. मतलब किसके थ्रू ये रेफर हुए हैं क्लाइंट्स, वो इन्फॉर्मेशन अभी CRM पे नहीं है. इस रिपोर्ट पे अगर हम आते हैं ना तो एक चीज एडिशनल मुझे मिलती है, दैट आई एम एबल टू सी आउट ऑफ माय टोटल लिस्ट ऑफ फैमिलीज, हमने संचय में कॉन्सेप्ट रखा है जहाँ पे आप उनका कैटेगराइजेशन देख सको कि आपके ऐसे कितने क्लाइंट्स है जो HNI को बिलोंग करता है, ऐसे कितने क्लाइंट्स है जो सुपर HNI को बिलोंग करता है, कौन अपर मिडिल में बिलोंग कर रहा है और कौन मिडिल में बिलोंग करता है. सो ये कैटेगराइजेशन मुझे हेल्प करता है कि मेरे कौन से क्लाइंट्स कितने मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या फिर की क्लाइंट्स है, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग द मोस्ट टू माई बिजनेस. तो इफ आई गेट दिस इंफॉर्मेशन एंड देन इफ आई सी कि मेरे ऐसे कितने क्लाइंट्स है जहां पे मेरे रेफरेंस मिसिंग है, आई कैन हैव वन मोर इंटरेस्टिंग इनसाइट कि मेरे जो सुपर HNI या HNI क्लाइंट्स है, इफ आई आइडेंटिफाई दीज रेफरल्स फर्स्ट, maybe I will be able to identify कि इनके networking sources क्या है and how they can help me generate more business by connecting me to more such people. तो इसीलिए हम रिपोर्ट्स पे यहाँ पे जब रेफरल्स आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ ये रिपोर्ट में स्पेसिफिकली मैंने क्लाइंट का कैटेगरी मेंशन किया हुआ है so that while your team is working on the categorization they can focus on the clients which are much more important. Now out of this when you go into the report, नेक्स्ट ग्रुपिंग आता है जिसमें मुझे RM वाइज रिपोर्ट मिलती है कि मेरे कौन से RM कितने क्लाइंट्स हैंडल करते हैं. तो यहाँ पे 90 ऐसे क्लाइंट्स है मेरे पास, फैमिलीज है मेरे पास जो HNI कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. इसमें वी कैन सी कि कौन से RM के पास में कितने क्लाइंट्स है एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट्स बिलोंग टू कविता देसाई. तो मैं यहाँ पे कविता देसाई की जो क्लाइंट्स है ना
वो वन बाय वन यहाँ से ओपन कर सकती हूँ एंड आई कैन स्टार्ट अपडेटिंग द क्लाइंट लिस्ट. So these way, there are two different options available in the system, using which you can start identifying कि आपके कौन से clients है जो किस referral के through है. Okay. Coming back to the report, coming back to the list of families. एक हमने देखा कि हमारे पास ऐसे कितने clients हैं जो referral के through tagged नहीं है, and इसको करने का तरीका क्या रहेगा. Now why we are providing you this default filter या फिर report कि आप देख सको कि अभी और कितना बाकी है, so that you can motivate your team and you get a real insight on ऐसे कितने clients है जिसका बाकी है और ऐसे कितने जो आपकी टीम ने कर दिए. तो the number will keep on motivating you कि अभी और इतना बाकी है तो मुझे और काम करने की जरूरत है या फिर इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है. So this is about families. Now, third thing which we have to focus on in today's webinar is, हमने ये तो देख लिया कि ऐसे कितने लीड्स है जो किस रेफरल के थ्रू है एंड हाउ मच इज माय रेफरल कंट्रीब्यूटिंग टू दैट बिजनेस. वैसे ही एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स में हमारे पास कितने ऐसे क्लाइंट्स है जो रेफरल्स के थ्रू है एंड वी हैव स्टार्टेड टैगिंग द रेफरल्स. वैसे ही हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि मेरी इंटरनल टीम में अगर कोई मुझे रेफरेंस दे रहे तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट. तो उस केस में यू कैन सी देयर आर कपल ऑफ नेम्स जैसे निर्भय पटेल है, वृषाली पारेख है. दीज आर माय इंटरनल टीम मेंबर्स. So what I can do is, if I want to see the contribution of my internal team members, I can just add one more filter here for the relationship manager. The referred by as my relationship manager. तो मैं यहाँ पे referred by select कर लूंगी. Okay, I have multiple, तो I'll do one thing, मैं नीचे add करूंगी यहाँ पे. Okay, empty. हाँ, sorry. So there will be one thing that I'll do. ऐसे कितने हैं जिनका referred by वृषाली पारेख है और ऐसे कितने हैं जिनका referred by निर्भय पटेल है. And this filter I'll do one thing. मैं यहाँ पे I want it from my entire list of clients. तो मैं सारे clients का list यहाँ पे ले लेती हूँ and I'll just apply. Okay. So now there are 29 clients which are coming. यहाँ पे मैं RM वाइज अगर ग्रुप कर दूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे ओके यहाँ पे एक रेफर्ड बाय का फील्ड मिसिंग है. लेट मी जस्ट ऐड दैट. सो कौन से रेफरल के थ्रू मेरे पास कितने रेफरेंसेस है या क्लाइंट्स है इन माय एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो मेरी टीम ने मुझे दिए हैं. सो नाउ आई एम गेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. मैंने यहाँ पे ऊपर सिर्फ 2 टीम मेंबर्स लिए हैं. उसी तरह से आपके पास अगर मल्टीपल टीम मेंबर्स है तो देर आर मल्टीपल वेज यू कैन डू सो. अभी मैंने यहाँ पे और मैं जितने मेरे टीम मेंबर्स है वो सब एज रेफर्ड बाय सिलेक्ट कर लिए हैं और उसमें से मैंने ये लिस्ट आइडेंटिफाई किया है. So right now I am getting one of my team members out of the 2 which I have selected और उनका contribution मेरे AUM में कितना है, उन्होंने total कितने clients मुझे refer किए हैं, that I am able to see. So this helps me identify कि मेरे clients के through मेरे पास referrals आ रहे हैं, वैसे कितने हैं referrals who are from my team or who is through me, तो मुझे वो भी यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा. So that is about the list of families with and without referral tagging, how this can help or how the referrals are contributing to your AUM.
अब बारी आती है रेफरल्स के कॉन्सेप्ट पे. I will again stop sharing the screen. There's one more interesting topic which I want to discuss. हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास क्लाइंट्स कितने हैं जिनके रेफरल्स हमने टैग किए हैं, लीड्स कितने हैं जिनके रेफरल्स हमने टैग किए हैं, बट व्हाट अबाउट कनेक्टिंग और एंगेजिंग विद दोज रेफरल्स ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस. कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि हमारे रेफरल्स टोटल है कितने. हम लीड लेवल पे तो बता रहे हैं कि ये हमारे रेफरल्स के थ्रू है, क्लाइंट पे भी बता रहे हैं कि ये रेफरल्स के थ्रू मेरे क्लाइंट्स है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट लिस्ट ऑफ एंटायर रेफरल्स दैट इज देयर इन माय सिस्टम. तो हमें कहीं पे वो भी मैनेज करना पड़ेगा सो दैट आई कैन कनेक्ट विद दोस रेफरल्स ऑन अ प्रोएक्टिव बेसिस एंड एंश्योर दैट आई एम गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ माय कनेक्शंस. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? So for that also we have a method. We can have list of all those referrals. जैसे अगर existing client है तो definitely आपके पास वो CRM में available रहेंगे. But अगर वो सिर्फ referrer है, they are not contributing as their own investment, तो उनकी भी list हम CRM में manage करेंगे. And we will have this at a contact level या फिर at client level. So ये कैसे manage होगा? I will just share the screen again and I will show it to you. I hope my screen is visible. This time I am going to the list of clients, or you can say the list of contacts. So here I have the list of all the contacts that are there in my system. I will just remove any of the filters that are applied. तो मेरे पास ये जो मेरी कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ रही है, इसमें हमने सारे कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं. कुछ है जो मेरे क्लाइंट्स है, कुछ है जो मेरे रेफरर्स है, तो हमने वो सारे कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ऐड किया हुआ है. इसमें अभी आप देख सकते हो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन पे सॉर्टिंग लगा है. सो द लिस्ट दैट आई एम गेटिंग ऑन द टॉप, दीज आर ऑल जस्ट माय रेफरर्स. इनका मेरे पास किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. दीज आई हैव एडेड इनटू माय सीआरएम जस्ट फॉर माय नॉलेज कि ये मेरे रेफरर्स है. उसी तरह से मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की लिस्ट भी है मेरे पास यहाँ पे. एंड नाउ फ्रॉम दिस आई वांट टू सी हाउ मेनी आर माय रेफरर्स. तो रेफरर्स के लिए हमने यहाँ पे एक फिल्टर बनाया है, लिस्ट ऑफ रेफरर्स. ये भी आपको सीआरएम में डिफॉल्ट में आएगा व्हेन यू आर व्हेन दिस गोस लाइव इनटू योर सीआरएम. तो लिस्ट ऑफ रेफरर्स, व्हेन आई एम selecting that predefined filter, I will get the list of all those contacts that are there in my CRM through whom I have gotten any business. It could be one client, it could be 100 clients. जिन्होंने भी contribute किया है, I will be getting the list of all those referrals. ठीक है? Now, out of this list of referrals, if a new referrer gets added, तो वो कैसे पता चलेगा? So let me just do one thing. यहाँ पे तो हम देख रहे हैं तो दीज आर ऑल माय एग्जिस्टिंग रेफरर्स. हमने ना ये आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है. लेट मी जस्ट क्लियर द फिल्टर वंस. Okay, so here there's one option called is referrer. I'll just take this on the front so that it's easily accessible. I will ask my team to manage the audience, please. ओके, सो यहाँ पे इस रेफरर हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है जो मुझे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है दैट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑल कॉन्टेक्ट्स दैट आर देयर इन माय सीआरएम हाउ मेनी आर माय रेफरर्स. अभी इसमें दो चीज कर सकते हैं. एक ऐसा कर सकती हूँ मैं कि मैं आपको ये ऑप्शन बना के दे दूं एंड आई आस्क यू टू मैन्युअली सेट कि कौन कौन आपके रेफरर्स है फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट्स. या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आपने जहां पे भी लीड पे आइडेंटिफाई किए हैं और आपने रेफरर टैग किया है, और एट कॉन्टेक्ट लेवल सॉरी एट फैमिली लेवल व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग दैट विच क्लाइंट वाज थ्रू विच रेफरर, आपने वहां पे अगर उन्हें टैग किया है, सो बेस्ड ऑन दैट टैगिंग आई ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई एंड टैग दैट स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट एज योर रेफरर. So in the CRM, we have done the second part
कि आपको ये मेहनत ना करना पड़े. When you are identifying your leads and you are tagging your referrer, or when you are doing this activity for your existing set of families or organizations and tagging the referrer, CRM will take care कि referrer automatically वहां पे set हो जाए. तो यहाँ पे I'll give you one example. Let's say we will take one of the referrers, one of the clients जो referrer नहीं है. जैसे let's take Adya Bose as an example. I'll go to the list of families. Now here these are the list of families जहाँ पे referrals नहीं है. ठीक है, मतलब ये clients सारे these are all my families जो जहाँ पे मुझे अभी identify करना बाकी है कि ये कौन से referrer के through थे. तो I will just select these two. I will update them, and in the referred by I will select Adya Bose, and I will update it. So जैसे ही मैंने फैमिली पे ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो फैमिलीज है ना, वो मुझे आद्या ने दिए थे. नाउ इफ आई गो टू द लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स जो हमने देखे थे कि हमारे रेफरर्स है कि नहीं है. In this list now I am not able to see that Adya Bose name. If I go to the list of is referrer yes, and if I search her name, तो अब मुझे यहाँ पे दिखता है कि आद्या बोस है इज नाउ माय रेफरर. तो ये सीआरएम आपके लिए ऑटोमेट कर लेगा. इट विल इंटेलिजेंटली आइडेंटिफाई एंड टैग योर रेफरर्स सो यू डोंट हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ हाउ डू वी सी कि ये रेफरर के थ्रू मेरे पास टोटल लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स कितने हैं. सो आई विल जस्ट गो टू आद्याज क्लाइंट लिस्ट. यहाँ पे मेरे पास आद्या एज अ क्लाइंट इंफॉर्मेशन आ रही है. यहाँ पे नीचे हमारे पास रेफरल फैमिलीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जहाँ पे आद्या के थ्रू मेरे पास कितने फैमिलीज है जो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं, वेयर शी हैज हेल्प मी गेट दैट टोटल बिजनेस. सो आई एम एबल टू सी दैट फैमिलीज. सो आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ से भी देख सकते हैं. एंड द अदर वे वाज द रिपोर्ट विच आई शोड यू कि आपके टोटल ऐसे कितने क्लाइंट्स है और द फैमिलीज दैट यू हैव that are through your referrals. So this is the referral client report. I'll just open this also and show it to you. एक तरीका हमने देखा कि आप वो रेफरर ओपन करो और रेफरर के सब पैनल में या फिर रेफरर के सेक्शन में आप रेफर्ड जितने भी फैमिलीज या ऑर्गेनाइजेशन है वो देख सकते हो. बट दिस इज एट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल रेफरल लेवल. इफ यू वांट टू सी एवरीथिंग एट वंस तो उसका तरीका क्या रहेगा. सो फॉर दैट वी हैव दिस रिपोर्ट. यहाँ पे मैंने फिल्टर लिया है कि हमारे पास फैमिली या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रेफर्ड बाय डिफाइंड हो, मतलब जहाँ पे मैंने क्लाइंट को टैग कर लिया है कि कौन से मेरे फैमिली से या ऑर्गेनाइजेशन है वो किस रेफरर के थ्रू है वो मेंशन करा हुआ है. तो देन आई विल बी गेटिंग दिस रिपोर्ट. और कौन से रेफरर के थ्रू मेरे पास टोटल कितने फैमिलीज है, उनका बिजनेस क्या है जो मेरे पास आ रहा है. सो नाउ आई एम गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन. Here also we have taken two different perspectives. One is through the referred by कि कौन से specific referral का मेरे पास total business कितना आ रहा है. तो here I can see Aditya Kata is giving me the maximum contribution to my business, followed by Arjun and then Karthik. तो इसी तरह से नेक्स्ट आई कैन सी इसमें से HNI क्लाइंट्स मेरे कितने हैं, अपर मिडिल कितने हैं, सुपर HNI कितने हैं या फिर मिडिल में कितने बिलोंग करते हैं. सो दिस रिपोर्ट गिव्स मी द इनसाइट ऑफ ईच एंड एवरी रेफरर दैट इज कंट्रीब्यूटिंग. इसमें आप डिटेल्स भी देख सकते हो. लेट्स से इफ आई गो एंड सिलेक्ट अनिरुद्ध अय्यर एज वन ऑफ माय रेफरर्स. इनके दो ही मेरे पास अभी तक रेफरेंस आए हैं, बट इफ यू सी द अमाउंट दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग इट इज वेरी हाई. And it also gives me the insights on which families are contributing to my business through that referrer. उनको कौन हैंडल कर रहा है अभी वो इंफॉर्मेशन भी मिलती है. एंड इफ आई वांट टू सी एनी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन इन दिस रिपोर्ट आई कैन पुल दैट. सो दिस इज वन वे आई कैन सी कि मेरे रेफरल्स मेरे बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इन एंड इफ आई डोंट वांट टू सी द डिटेल्स देयर इज अनदर रिपोर्ट व्हिच आई कैन गो थ्रू which is the referrer's AUM contribution. So if I go to this report,
I see a holistic view where I see के total number of referrals मेरे कितने हैं who have contributed to my business, and out of their contribution, what is their HNI contribution, what is their super HNI contribution, अपर मिडल में कितना है और मिडल में कितना है, एंड एट द एंड उनका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है, दैट आल्सो आई कैन सी ईच एंड एवरी रेफरर वाइज, एंड दिस इज द ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेफरर्स इन माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट list or my existing client portfolio. So this is all about how the referrer business is analyzed, या आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. बट इसी के साथ में हम जो बात कर रहे थे कि क्लाइंट का रेफरर का एंगेजमेंट कैसे मैनेज करना है. सो लेट अस गो टू दैट पार्ट ऑफ द डिस्कशन नाउ. मैंने आपको बताया कि आप रेफरर स्टैग कैसे कर सकते हो. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, रेफरर्स कितने हैं वो तो मुझे पता चल गया सीआरएम में बेस्ड ऑन दिस टैगिंग. This tagging is happening automatically, तो I do not have to do anything. मुझे सिर्फ मेरे existing clients में और मेरे leads या prospects जो है उसमें identify करना है कि किसके थ्रू था. बाकी का काम CRM मेरे लिए कर रहे हैं. So my list of referrers is building on its own. Out of this list of referrers, ऐसे कितने referrers हैं जिनके साथ में मैंने मेरा मीटिंग का शेड्यूल नहीं बनाया है. Now when we talk about meeting schedule, there can be two ways. एक आप ऐसा कर सकते हो दैट यू कैन हैव अ मैनुअल मीटिंग सेटअप विद दैट रेफरर. आप ध्यान रखो कि आपके टोटल नंबर ऑफ रेफरर्स कितने हैं, उसमें से कौन से रेफरर के साथ में आपको कब मीटिंग करना है. एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम आपको सीआरएम में ही ये प्रोविजन दे, जैसे दोज ऑफ यू हु आर ऑलरेडी यूजिंग संचय सीआरएम माइट बी नोइंग कि हमने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग के लिए भी सिमिलर कॉन्सेप्ट रखा है. I'll just stop sharing the screen and we can discuss couple of minutes on this concept. तो हमने पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट रखा था, दैट इंस्टेड ऑफ क्लाइंट डिसाइडिंग के उन्हें हमारे साथ में कब मीटिंग करना है, we proactively engage our clients and ensure that they feel listened, they feel connected and they know that where their investment is going. तो इसके लिए हमने ऑटोमेशन प्लान किया था दैट सीआरएम विल टेक केयर based on your client categorization when you will meet which customer. वैसे ही जब हम रिव्यू रेफरर की बात करें तो रेफरर्स के केस में कैसा रहेगा, यू हैव आइडेंटिफाइड योर लिस्ट ऑफ रेफरर्स. इन दिस लिस्ट ऑफ रेफरर्स योर टीम कैन डिसाइड कि उनको कौन से रेफरर को किस फ्रीक्वेंसी पे मिलना है. एंड जस्ट लाइक पोर्टफोलियो रिव्यूज फॉर रेफरर्स बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, जो हमने अभी रिपोर्ट्स पे देखा कि लीड का उनका बिजनेस कंट्रीब्यूशन कितना है या उनका फैमिली पे बिजनेस कंट्रीब्यूशन कितना है, योर टीम कैन डिसाइड कि उनको किस रेफरर के साथ में कितना एक्टिवली एंगेज होना है. एंड बेस्ड ऑन दैट आइडेंटिफिकेशन दे कैन सेट ऑन द क्लाइंट कॉन्टेक्ट ऑफ दैट रेफरर कि उनका मीटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और उनको वो क्लाइंट वो रेफरर के साथ में नेक्स्ट मीटिंग कब करना है. So I will be showing that section of the this demo now. But before that, I want to know whether what I have covered up till now, is it relevant? Are you having any questions or any feedback on that? We can discuss. Otherwise, we will move forward. Okay, you can just add. Yes, sir. Okay, you can just add in the chats if you have any suggestions, any feedback, or if you have any queries related to the process that we are discussing right now. I will move forward and we will go to the next section जहाँ पे हम ये automate कैसे कर सकते हैं so that system works for you and you do not have to remember कि आपको कौन से referrals को कब connect करना है. So I'll just share the screen and we will start. सो ये हमारी क्लाइंट लेवल पे हमने जो रेफरर्स आइडेंटिफाई किए थे, आई एम गेटिंग दैट लिस्ट ऑफ रेफरर्स. ये रेफरर्स में कब कौन से रेफरर्स के साथ में मीटिंग करनी है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्रोविजन रखा है. यू कैन जस्ट गो टू दैट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट
यहाँ पे ना मीटिंग शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे हमने बात किया बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन, अगर वो सुपर एचएनआई में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपके लिए वो उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरर हुए, तो यू माइट हैव टू कनेक्ट देम ऑन अ मंथली बेसिस। यू कैन डिसाइड एंड यू कैन सेट द फ्रीक्वेंसी। वैसे ही अगर वो समझो कि अपर मिडल या फिर मिडल में आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो मे बी हाफ ईयरली और ईयरली यू कैन सेट देयर एंगेजमेंट फ्रीक्वेंसी। तो वैसे आप रेफरर्स के साथ में कितने फ्रीक्वेंसी पे एंगेज करना चाहते हो, यू कैन डिसाइड दैट। लेट्स से आई विल सेट फॉर काव्या नायर एज क्वार्टरली। और पहला मीटिंग कब करना है, तो आई वुड से कि मुझे इनके साथ में पहला मीटिंग नेक्स्ट वीक करना है विच इज ऑन 19th। आफ्टर सेटिंग दिस इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे ये मीटिंग रिक्वेस्ट सेट कर दूंगी एंड द मीटिंग विल गेट क्रिएटेड। नाउ दिस सेम थिंग विल हैपन फॉर ऑल माय रेफरर्स दैट आई हैव इन माय सीआरएम। एंड हाउ कैन आई सी कि मेरे कौन से रेफरर्स के साथ में कितने मीटिंग्स शेड्यूल्ड है, कितने मीटिंग्स ऐसे हैं जो शेड्यूल तो हुए थे बट वो टाइम पे हो नहीं पाए हैं। एंड थर्ड एनालिसिस विच आई वुड वांट टू सी इज ऐसे कितने शेड्यूल्स है जो टाइम पे कंप्लीट हुए हैं और उसमें से आउटकम क्या आया था। सो लेट अस क्विकली गो टू द रिपोर्ट्स। यहाँ पे मीटिंग मॉड्यूल पे हमने दो रिपोर्ट्स बनाए हैं। वन इज द रेफरल मीटिंग रिपोर्ट एंड रेफरल मीटिंग स्केड्यूल बट नॉट डन। सो पहले हम वो बात करते हैं कि हमने जो रेफरल मीटिंग्स स्केड्यूल किए थे उसमें से अभी भी मीटिंग पेंडिंग है। वैसे मेरे पास में कितने टोटल यहाँ पे लिस्ट ऑफ मीटिंग्स है। आई जस्ट अप्लाई and these are the scheduled meetings that are pending. Now these are all in the future dates. Similarly, if there are any meetings that are in the past date and that are not done, तो वो आपको यहाँ पे according to the dates दिख सकते हैं। We can also filter this out and group them according to the day, month, year, week or quarter as per your requirement. एंड कौन से क्लाइंट के साथ में वो मीटिंग है। नाउ व्हेन दीज सम नॉमेनक्लेचर्स विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रेफरल मैकेनिज्म व्हिच वी हैव डेवलप्ड। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्लाइंट दिख रहा है और क्लाइंट की फैमिली दिख रही है, बट दिस विल चेंज टू सो दैट इट्स नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू। दीज आर द रेफरर्स। तो कौन से रेफरर के साथ में मीटिंग है और वो रेफरर अगर मेरा क्लाइंट है तो वो कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, दिस इज गिविंग मी दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है। This same report I can view or as a matrix also. Now here if I see the filter applied is okay. Meeting type is referral meeting and date is this year. So this is giving me the list of all those meetings that are either done or that are supposed to be done in this year, and the type of meeting is referral meeting. So this referral meeting is also something we have recently introduced. हम अभी तक इफ यू आर यूजिंग संचय यू माइट बी नोइंग कि हमने पोर्टफोलियो रिव्यू या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट, एसआईपी, सर्विस ट्रांजैक्शंस ये तरह के मीटिंग टाइप्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे। नाउ दैट वी वांट टू मैनेज अवर रेफरल आल्सो इनटू द सीआरएम, तो रेफरल मीटिंग टाइप भी हमने यहाँ पे एक ऐड किया है सो दैट आई कैन सी कि मेरे पास रेफरल के साथ मीटिंग करने हैं ना, वैसे टोटल कितने मीटिंग सीआरएम में बने and to whom does it belong. So now this is the list of my existing team members जो ये रेफरर्स के साथ में कनेक्टेड रहेंगे। सो जैसे हम आरएम्स अपॉइंट करते हैं सो दैट ईच एंड एवरी रिलेशनशिप मैनेजर कैन स्टे कनेक्टेड विथ माय क्लाइंट्स एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दैट क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट्स, वैसे ही हमारे रेफरल्स जो है कौन से रेफरल्स मेरे किस टीम मेंबर के पास है, हाउ आर दोस टीम मेंबर्स कनेक्टिंग देम, कितने फ्रीक्वेंसी पे उनके साथ मीटिंग हो रहे है, वो मीटिंग का आउटकम क्या आ रहा है, दैट वी कैन ट्रैक फ्रॉम दीज रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि एक मेरे पास जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है दैट इज अकॉर्डिंग टू माय आरएम्स, दैट विच आरएम इज हैविंग हाउ मेनी रिव्यू मीटिंग्स विथ माय रेफरर्स इन दिस ईयर, उसमें से कौन से मंथ में कितने रिव्यू मीटिंग्स हुए हैं, मुझे वो इंफॉर्मेशन भी आ रही है। And if I see the same report in the form of a matrix,
तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि टोटल कितने मेरे आरएम से जिन्होंने मीटिंग किए हैं रेफरर्स के साथ में, कितने मीटिंग कौन से मंथ में हुए हैं, एंड व्हाट इज द टोटल मीटिंग दैट हैज बीन कंप्लीटेड। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, वी हैव नॉट टेकन द फिल्टर ऑफ वेदर दैट मीटिंग इज कंप्लीटेड और नॉट, बिकॉज वो यहाँ पे मंथ से आइडेंटिफाई हो रहा है, दोज इन द फ्यूचर मंथ्स आर पेंडिंग, दोज इन द मंथ्स प्रायर टू दिस मंथ are all completed, but we can have a different set kind of a report also where I can have other analysis also कि किस आरएम की ने कितने मीटिंग किए हैं, उसमें से उसका स्टेटस कितना है, क्या है, कंप्लीटेड मीटिंग कितने हैं या फिर ऑनगोइंग मीटिंग्स कितने हैं, वो मैं देख सकती हूँ। वैसे ही व्हाट आई कैन सी इज इफ दैट रेफरर इज माय एग्जिस्टिंग क्लाइंट, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है इन माय टोटल बिजनेस, तो हम वो भी देख सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट आल्सो वी कैन एनालाइज द रिपोर्ट्स। सो दिस इज अबाउट everything that we can do with referrers in our CRM। हमने सबसे पहले देखा कि आप जहां से जर्नी स्टार्ट करते हो अपने इन्वेस्टमेंट का विथ योर एग्जिस्टिंग विथ योर क्लाइंट्स या विथ योर प्रोस्पेक्ट्स, तो जो लीड्स बनाते हैं वहां पे हम रेफरर्स कैसे टैग कर सकते हैं। सेकेंड, वी सॉ कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है, द फैमिलीज दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर बिजनेस, तो वो फैमिलीज का जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, इन दैट कंट्रीब्यूशन रेफरर्स ने हमें कितना हेल्प किया था। तो वी हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग कि वो रेफरर्स को कैसे टैग कर सकते हैं फैमिली पे। बेस्ड ऑन दिस वी कैन हैव द बिजनेस कंट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑन लीड एंड ऑन फैमिलीज फ्रॉम द रिपोर्ट्स दैट वी हैव क्रिएटेड कि लीड्स में टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है एंड whether that lead is giving me the business or not। now इसमें ना एक चीज और, just apart from this entire concept which I have shown on the CRM, there's one concept I wanted to discuss in a little detail। बहुत बार ना रेफरल से रेफरल्स कब मांगने हैं, this is one thing which we have discussed with a couple of our clients while discussing this entire process and making this into the CRM। तो हमने उनको पूछा था कि रेफरल्स के लिए कब रिक्वेस्ट करना चाहिए एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। तो देयर वर टू थिंग्स दैट दे हेल्प अस अंडरस्टैंड। वन इज if your existing client has trust on you that you are managing their portfolio well, and if you are giving that satisfaction to the client, अगर वो client खुश है आपसे और वो आपको ट्रस्ट करता है, तो ही वो आपको रेफरल जो देगा ना वो एक्चुअल में जेन्युइन रेफरल होगा। Otherwise, you might have seen in your business, you might be getting the referrals from your existing clients, but they don't turn out into the business you expected. That is because that referral was not matured enough. So when you are asking for referrals, this will make a lot of difference. And one of our clients even suggested that in their own organization, he shared his experience. Asking for a referral was a process that they follow, but they don't ask for referrals for at least 3 years, because म्यूचुअल फंड्स में हम सबको पता है कि बिजनेस या हमारा इन्वेस्टमेंट ग्रो होने में टाइम लगता है। सो इफ दैट क्लाइंट इज नॉट कन्विंस दैट हिमसेल्फ इज गेटिंग द outcome that he desired from your services, how can he give you the referrals when he himself is not invested? So this 3 months or the 3 years or the period that it is required to mature a client to understand whether he will be getting that outcome or not, you should give that to the clients instead of asking for the referrals right away. So this was one thing which I wanted to discuss apart from the process which we had shown। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई होप जो हमने रेफरल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया सीआरएम में, जैसे लीड्स पे, फैमिलीज पे या फिर रिपोर्ट्स में से आप एनालिसिस लेवल पे क्या क्या देख सकते हो, एंड हाउ दिस एंटायर रेफरल मैनेजमेंट सिस्टम विच वी हैड डिस्कस्ड कैन बी डिप्लॉयड इन संचय। दिस कैन हेल्प एंड whether it is contributing to your business or not. So I would like to ask Limit sir to take this ahead. And if you have any feedback or questions, please add it in the chat box. I would look forward to it. Thank you so much.
Okay, so thank you very much for your time and attention and everything. As Bhumi said, if you have any doubt, queries, questions, suggestions, remarks, feedback, please share them with us. We will surely make sure that it is implemented. Okay. And if you want to see a detailed dev.com and we'll arrange it, you can just fill up from our side. If you have questions, we will continue the meeting. And otherwise, I have one last announcement to make. You have any questions or not? Hello, Ramesh here from Am I Bangalore. audible clearly? Yeah, you're audible. Yes, sir. Yeah. See, I was all through into insurance for last 24 years. Okay. I just restarted my mutual fund business a couple of months back. Okay. Okay. So how this platform will help me grow my business, mutual fund business? Can I club, Sorry. life insurance, health insurance business details also here? Yeah, definitely. Hello? We have clients who are using it. Okay. Yeah. We So already how have can I clients scale who are my using that way. mutual fund business using CRM? So in a lot of ways, first of all, this helps you to manage your customers and their relationship. Okay. Firstly, by categorizing your client properly, because most of the time our clients are not categorizing. Then secondly, as you said, since you are already into business of insurance for a very long time and now you have started mutual fund, Yeah. so obviously you are going to reach out to your insurance clients for mutual fund. Okay. Correct. So CRM can help you in that also. Okay. Okay. I And think you should, we can ask our team to arrange a demo for you so that everything will be clear. I think once Nirbhay had done that, but I think it was a little long back. I missed a lot of things, I think. Let's see. I'll connect with them again and Sure, sir. probably. By the way, we Sure. are in Bangalore on Hello. Anil Kumar Gupta ji, no whiteboard, please. Hello. Yeah, thank you. Sir, we will be in Bangalore on 16th and 17th. There is a very big event organized by AAFM. So Correct. if at all you are in Bangalore, we can surely meet. Okay, sir. I'll connect with you and then we'll meet up. Sure, Okay. sir. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much. And I have one last announcement. Okay. For that announcement, I need to request you all to please start your camera. Yes. So 3 people have started the camera. I request you all, please, yes, start the camera. So Dhaval bhai, thank you. Nitin bhai, thank you very much. Ramesh bhai, thank you. I hope आप लोगों को अच्छा लगा सब. ठीक है? And yes. So the last announcement is that we have arranged a delicious dinner at your home. Don't forget to enjoy it and say thank you to whoever has prepared it. Okay. See you soon next time. Thank you very much.